Hi, good evening, everyone. Please write it in the group. We are starting. I see a very less presence today. Hey, good evening. Can you please just remind everyone once? Okay, so we'll begin. So I want to go ahead and I want to do the concept of consumer surplus today. Of course, all of us have done this concept in the past. There is nothing new in this concept. But today I want to go ahead and I want to give you the different definition in case वो match the following में आए. So I want to go ahead and I want to tell you the different definitions of consumer surplus and how they can come and match the following. I want to go ahead and discuss that. So first of all, we know the basic definition of consumer surplus जो Marshallian ने दिया था. So according to Marshallian, या लीव दैट ऑल्सो. पहले हम बेसिक डेफिनेशन अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, सो यू विल टेल अस व्हाट यू विल टेल बेटा. कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बिलो डिमांड कर्व above price. Right, so if I go ahead and if I make a demand curve and I have some price, area below demand curve and above price, that is called as consumer surplus. Area below demand curve and above price is called as consumer surplus. When we go ahead and when we define demand, then this demand can be defined as the maximum willingness to pay for a commodity. मतलब मैं maximum एक commodity के लिए कितना pay करना चाहूंगी, that is called as demand. ठीक है. So for example, let's say the price of the commodity is 10 rupees. Now, for this first unit, the question is how much the consumer is willing to pay. Maximum वो consumer उस good के लिए कितना pay करना चाहता है. So let's say the consumer is willingness to pay is 30. Then consumer surplus can be defined as 30 minus 10, which means 20. So what you are willing to pay and what you actually pay, the difference between that becomes consumer surplus. ये पहला definition है consumer surplus का. But apart from this also, there are some definitions of consumer surplus. इसके अलावा भी कुछ definition हैं जो हमें समझनी है. In which the first definition of consumer surplus in particular is called as the Marshall approach. So we know that when we talk about Marshall, Marshall had gone ahead and he had given the cardinal utility approach. Isn't it? मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड कार्डिनैलिटी अप्रोच डिक्लेयर किया था. तो अकॉर्डिंग टू मार्शल,
जब हम इसका सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इफ आई गो बैक टू वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम, व्हाट वाज दैट बेटा? MUX upon MUM is equal to PX. And if I assume that MUM is 1, suppose, तो I get MUX is equal to PX. माने एक कंज्यूमर कमोडिटी को तब तक लेता है जब तक उसका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल ना हो जाए. A consumer will buy the commodity as long till the point as long as the marginal utility becomes equal to price, right? So we understand that MUX should be equal to PX becomes my equilibrium condition. Now just think about it. We know we have diminishing marginal utility. माने marginal utility curve तो ये है. We know that this is price. तो I know that this is my equilibrium quantity. बाकी हर क्वांटिटी के लिए विच इज टू द लेफ्ट, Q1, Q2, Q3, Q4, जो भी लेफ्ट में क्वांटिटीज हैं, ऑल क्वांटिटीज टू द लेफ्ट, वी नोटिस दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी माने द एक्स्ट्रा यूटिलिटी वी गेट बाय कंज्यूमिंग द कमोडिटी, दैट इज मोर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस बाय मार्शल. तो मार्शल ने बोला कि एरिया बिलो मार्जिनल यूटिलिटी अबव प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस. एरिया बिलो मार्जिनल यूटिलिटी अबव प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस. ये डेफिनेशन नंबर 2 ही. अब देयर इज अनदर वे टू सी दिस थिंग. कैसे? जैसे अगर मैं इसको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बोलूं, दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड दिस इज माय प्राइस एंड ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो आई वांट दिस एरिया बेटा, मुझे ये एरिया चाहिए, दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस. बट इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं. कैसे? जस्ट इमेजिन इफ आई फाइंड द एरिया अंडर मार्जिनल यूटिलिटी, माने अगर मैं ये पूरा एरिया निकालूं, ब्लू एरिया, एंड आई सब्ट्रैक्ट ये वाला एरिया, दिस ग्रीन एरिया, तो उनका जो डिफरेंस होगा इट विल बी दिस. लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर. ये दिस विल बी लेफ्ट रेड कलर. माने फ्रॉम ब्लू एरिया इफ आई रिमूव द ग्रीन एरिया, अगर मैं ब्लू में से ग्रीन एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दैट, तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस रेड एरिया, एंड वही तो कंज्यूमर सरप्लस है. दैट इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस इज गोइंग टू बी. तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ वी कैन गो एंड फाइंड दैट ब्लू एरिया. माने क्या? ब्लू एरिया मीन्स आई हैव टू फाइंड एरिया अंडर मार्जिनल यूटिलिटी. ये एंड किसी भी कर्व के अंडर का एरिया कैसे निकलता है मैथमेटिकली? हाउ डू वी फाइंड एरिया अंडर अ कर्व? वी कैन फाइंड एरिया अंडर द कर्व बाय इंटीग्रेटिंग दैट कर्व. ठीक है, तो मैंने आई फाइंड द ब्लू एरिया फर्स्ट. ब्लू एरिया इज एरिया अंडर marginal utility. I find this area. How do we find area under the curve? By integrating marginal utility. Integration means adding all marginal utility together. तो एक बात बताओ, when we differentiate total utility, तो हमें marginal utility मिलता है. It means when I will integrate marginal utility, तो मुझे total utility मिलेगा. If differentiating a function gives you something, तो integrating that will give you that function back. तो माने यहां पर I will have my total utility. This blue area जो है, this is nothing but total utility. अब
व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस ये एरिया है, दिस ट्राइंगल इज कंज्यूमर सरप्लस, माने आई नीड दिस एरिया, ये एरिया चाहिए मुझे। आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द बिगर एरिया, ब्लू एरिया मेरे पास आ गया है, आई फाउंड दैट आउट, बट आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, ग्रीन एरिया, तो फिर आई विल बी लेफ्ट अप विद दिस ट्राइंगल जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। एंड व्हाट इज दिस ग्रीन एरिया? दिस इज दिस rectangle, which is nothing but price into quantity, right? So it is nothing but price into quantity, and price into quantity is called what? Total expenditure, है ना? So we can go ahead and we can say that consumer surplus, which is nothing but this area of the triangle, ये triangle ही है consumer surplus, it can be this entire blue area minus this rectangle, and blue area is nothing but total utility and rectangle is total expenditure. So this is another definition of consumer surplus. Money, if someone tells me what is total utility, it will be consumer surplus plus total expenditure. Money consumer surplus plus price into quantity is total utility. Remember this. ठीक है. Let me explain this again, right? So in order to explain this, what we can go ahead and we can do is the following. देखो, this is my marginal utility curve. This is my price. ठीक है. Consumer surplus is area below marginal utility above price. माने consumer surplus ये एरिया है. This is consumer surplus below marginal utility above price. ठीक है. I want to find this area. ये येलो एरिया निकालना है. If I want to find this area, so what I am saying is that this yellow area can be ये पूरा, this entire thing minus this thing. That will be. So I have to find this entire thing first. I have to find this entire thing. This thing is nothing but area under the curve. Area under curve माने I am integrating marginal utility. तो when I integrate marginal utility, उसका आंसर हो गया total utility. Because when you differentiate total utility, you get marginal utility. So when you will integrate marginal utility, you will get total utility. ठीक है? That's the first thing. तो ये जो entire black area that you see here, that is total utility. अच्छा, अब I have to subtract this area so that I can get that yellow area. This is rectangle. Rectangle is price into quantity. And price into quantity is total expenditure. ठीक है. So when I subtract the two, what will I go ahead and what will I get? I will get this triangle. So this consumer surplus has another formula, total utility minus total expenditure. That's right. Yes. Is it clear now? Clear हुआ ये formula भी? ठीक है. Now another thing. So now we go to the Hixian approach. ठीक है. So Hixian approach.
तो ना मैच द फॉलोइंग में एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. माने सपोज इफ आई टेल यू कंज्यूमर सरप्लस, प्रॉफिट, एंड लेट्स से दो अदर चीज दी हुई से टोटल कॉस्ट एंड से मार्जिनल रेवेन्यू, एंड यू गिवन फॉर्मूलाज. ठीक है, एंड हियर आई एम गिवन total utility plus price into total utility minus price into quantity. ठीक है, and here I am given say total revenue minus total cost, and here I am given integration of marginal cost, and here I am given differentiation of टोटल रेवेन्यू. ऐसा कुछ माने इन एग्जाम इट मे हैपन कि आपको एक साइड पे विल बी गिवन द नेम एंड द अदर साइड विल बी योर फॉर्मूला, तो यू हैव टू मैच. हाँ, सो यू कैन सी दैट दिस this consumer surplus matches this formula. ठीक है, this is what is important, that these formulas can come in your match the following. ठीक है, अब हम आते हैं हिक्सियन अप्रोच पे. तो हिक्सियन बेसिकली ही वाज नॉट अ वेरी फैन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. माने उसको मतलब नहीं था कि व्हाट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज योर यूटिलिटी, व्हाट इज योर टोटल यूटिलिटी. ये सारा टर्म्स हिक्सियन नेवर cared about, right? And he was always interested in ordinal utility, ranking of bundle. तो हिक्सियन ने कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज दिए, एंड हिक्सियन ने कंज्यूमर, हिक्सियन गेव मेनी टर्म्स. हाँ, एक उन्होंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन. एक टर्म यूज हुआ इक्विवेलेंट वेरिएशन. राइट, एंड एक टर्म यूज हुआ कंज्यूमर सरप्लस. These three terms got introduced. ठीक है, now see, listen to me very carefully. Huh, when we talk about consumer surplus, the trick to solving match the following can be elimination. Mani, the things which you mark them first and then you look into the options, right? So out of 4 options, only 1 or 2 will be those options jahan pe what is matching correctly. So for example, जैसे यहाँ पे ना, सो फॉर एग्जाम्पल आई नो समथिंग कि हाँ प्रॉफिट इज TR माइनस TC, ये फॉर श्योर है. दिस इज समथिंग आई नो फॉर श्योर. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट. नाउ आई एम गिवन ABCD हियर. आई एम गिवन 1 2 3 4. नॉट ऑल ऑप्शंस में B विल बी मार्क्ड विद 2. ठीक है, तो एक में B विल बी विद 2, एक में B विल बी विद 3, एक में B विल बी विद 1, एंड एक में B विल बी विद 2. So because I know that profit is total revenue minus total cost, माने ये बात clear हो गई that definitely this option and this option is eliminated. ठीक है, तो maybe मुझे I don't know match the following for all 4, but I only know match the following for 2. So using the method of elimination is a good way to do this thing, है ना. फिर एक भी और पता है तो you will get the answer. ठीक है, so you can use the method of elimination and match the following, but फिर भी मेरा suggestion रहता है that you go ahead and you read as many formulas as possible. ठीक है, don't skip out on the formulas. Formulas बहुत important है from exam point of view. ठीक है, let's continue. Yes beta, we started at 5:30. I waited for 10 minutes before we started, so 5:40 rather. ठीक है, okay, so now we talk about Higgs. तो Higgs में Higgs introduced something which is called as compensated demand curve.
एंड इसको रिवाइज करने के लिए द बेस्ट आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द स्लट्सकी इक्वेशन or the Hixian approach, anyone. So when we go ahead and when we see any change in price, जब price बढ़ता है या कम होता है, the total price effect or total effect can be distributed in two parts, substitution effect and income effect. ठीक है. Similarly, this is true for all goods, चाहे हमारा normal good हो, inferior good हो या given good हो. अब what is substitution effect saying? Substitution effect is always related to price of related goods. माने फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है दैट लेट्स से प्राइस ऑफ गुड एक्स हैज डिक्रीज्ड, तो जो हमारा पी एक्स बाय पी वाई रेशियो होगा वो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ होगा. देयर मस्ट हैव बीन अ डिक्रीज इन द पी एक्स बाय पी वाई रेशियो. एंड अगर ये रेशियो डिक्रीज हुआ होगा, it would have meant that because good X is relatively cheaper, we should increase the demand of good X. Substitution effect says it does not matter what kind of good we are talking about. इससे कोई फर्क नहीं है कि क्या हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, इंफीरियर गुड की बात कर रहे हैं या गिवन गुड का. Does not matter which good we talk about. Whenever px will change, px by py का रेशियो will change. जब भी px चेंज होगा तो px by py का रेशियो चेंज होगा. And whenever this ratio will change, we should act accordingly. Similarly, if px increases, then px by py increases. So x has become relatively expensive, you reduce x. तो substitution effect, whatever good it is, कोई भी good क्यों ना हो, will always act in opposite direction to price. तो माने यहां पर when suppose price of good x has decreased, चाहे normal good हो, inferior good हो या given good हो, substitution effect says we should increase the demand of good x. We should increase the demand of good x. बेटा अब बात करेंगे हम इनकम इफेक्ट की. Income effect is related to purchasing power of the individual. So when price of good X decreases, the real income of individual increases. The real income of individual increases. तो क्योंकि इंडिविजुअल का रियल इनकम इंक्रीज हुआ है, how we will act will depend on the type of good. Now, when my purchasing power increases, if it is a normal good, I want to demand more. If it is inferior good, I want to demand less. Because it is inferior, मुझे नहीं डिमांड करना जब उसका परचेजिंग पावर अच्छा है मेरा. I don't want to go for inferior good. And if it is given good, I want to demand less. इन दोनों को ऐड करके I get what is called as the total effect. So the sum of these two is called as total effect. Now since these two are moving in the same direction, तो total effect कहेगा कि increase good X. These two are moving in different direction. ये increase है, ये decrease है, but increases more. माने inferior goods में substitution effect is more than income effect. Increase is more than decrease. तो X increase करेंगे. And given goods में income effect is more than substitution effect. So we will decrease good X. तो when price of good X decreases, यहां पे demand of X increases, price of good X decreases, demand increases, यहां पे demand decreases. ठीक है. Therefore, क्योंकि यहां price and demand are moving in same direction, हम बोल सकते हैं that we have the law of demand exception.
So we have exception to the law of demand. Law of demand fulfill नहीं हुआ है यहाँ पे. अब बहुत सिंपल है. When I only show the substitution effect कि price change से how X is acting in the substitution effect, when we only show that, तो बेटा उसको बोल देते हैं compensated demand curve. That is called as compensated demand curve. और अगर आप ध्यान दो, so whether it is normal good, inferior good or given good, तो price of decrease होने पे demand is always increasing according to substitution effect, right? So therefore the compensated demand curve is always downward sloping. माने जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है फॉर गिवन गुड, राइट? ओरिजिनल डिमांड कर्व कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग आल्सो, बट जो कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व है इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. How do we know whether it will be more or less? Based on the relation or based on the type of the good, right? Because given goods are those goods which do not satisfy the law of demand, and inferior goods satisfy the law of demand. So ultimately I need यहाँ पे demand to decrease and demand to increase. So accordingly the decrease should be more than increase, and यहाँ पे increase should be more than decrease. What about the sign between them? Sign between them means I didn't get the question. Here price is decreasing and ultimately demand is increasing, so they are moving in opposite direction. So negative relationship, negative relation. Price is decreasing, demand is decreasing, positive relation. Price is decreasing, demand is increasing, negative relation. Is that what you're asking? So you just see this arrow, huh? So if it is in opposite direction, then negative sign. If they're in the same direction, then positive sign. That's how you can go ahead and see. Okay. So now, the compensated demand curve will always be downward sloping because it shows substitution effect. And substitution effect is always opposite to price. Price के relation के हमेशा opposite में substitution effect काम करता है. ठीक है. हिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सरप्लस, जब भी हम प्राइस का लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कंज्यूमर सरप्लस है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू हिक्स, कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बिलो कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व above price. Area below compensated demand curve and above price. Is it clear? This is how Hicks defined it. Okay. Now, if I ask you, एक कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं. If you're able to solve question on consumer surplus, बहुत सिंपल से शुरू करेंगे. That the demand curve is P is equal to 100 minus 2Q. Price is 20. Find consumer surplus. 800, 900, 1000,